हम्म, 10 का ई स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर किधर है इक्वल टू यार, माइनस 2 जी थीटा। किधर है भाई, मुझे भी देखना पड़ेगी। 152, 150 है सर। 150 है, 2 नहीं है। लास्ट 2 टाइम नहीं किया है सर, था, 150। लास्ट टाइम किया था ना अपन ने ये। ये सर 150 एंड 150। 2 दोनों है। यस सर। तो 150 क्या था, इनको जो, डेल स्क्वायर अपॉन हाँ जो नहीं आया उनको लिखा देते हैं अपन। डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यही था यस सर। कुणाल। एफ और इक्वल टू माइनस 2g थीटा, दिस वाज द 150. So who was absent, who were absent means Abhijit, I think. राठौड़ तो था लास्ट काम, विवेक भी नहीं था, विवेक एंड यू रेफर टू द प्रीवियस with your partners, these colleagues, about these notes. And the equation 152 was, Pradeep? डेल फाई अपॉन डेल एस इज इक्वल टू 0। Yes. d5 upon ds is equal to 0. This was the 152. So now you compare these equation, our माइनस था ना, 2g थीटा, किधर किधर माइनस था, यहाँ माइनस था नहीं, माइनस माइनस 2g थीटा। हाँ माइनस 2g थीटा है, पर ये तो प्लस ही था ना, यहाँ ये प्लस होके ये कैंसिल होके d5/ds बन गई, ये तो प्लस ही। वो इक्वेशन 151 में बोलते हैं सर। हाँ उसमें था माइनस 2g थीटा, वो मैंने लिखा है शायद, यहाँ माइनस दिख नहीं रहा, दिस इज माइनस 151। हाँ और एफ फिजिकल टू माइनस 2g थीटा था, दिस वाज 151। Now you write down. At the boundary, the deflection of the membrane is 0. Naturally, boundary पर deflection हमेशा of the beam or anything is 0. It cannot deflect at the boundary, the thing, it is supported, na? So at the boundary, the deflection of the membrane is 0. Comparing equation 159, comparing equation 159 and the boundary condition for deflection Z of the membrane with equation 150 and boundary condition 152. For the stress function phi, we conclude that these two problems are identical. Hence from the deflections of the membrane, लिख पा रहे हैं ना कि स्पीड ज़्यादा हो गई मेरी, लिख रहे हैं सब, लिख लिया कि नहीं? लिख लिया सर। फ्रॉम डिफ्लेक्शन, हेंस फ्रॉम डिफ्लेक्शन, अच्छा हाँ, hence from the deflections of the membrane we can obtain
we can obtain value of phi by replacing quantity minus q upon s, by replacing quantity minus q upon s of equation 159 minus q upon s of equation 159 with the quantity f is equal to minus 2g theta of equation 150 of quantity f is equal to minus 2g theta of the equation 150. Do you know the contour in the survey? Yes, sir, same elevation. Yes, same elevation. So, in the membrane also I can draw the figure. डस्टर किधर है भाई? इसका डस्टर, हाँ ओके, मिल गया. इसको रब कर दूं? Yes, sir.
हेलो हेलो। Yes, sir. आया आवाज? Yes. क्या यार, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? फिर गया? हाँ, चल रहा है? So consider any point B on the membrane. Consider any point B on the membrane. The deflection of the membrane, along the contour line, through this point is constant. आ रहा है समझ में? क्योंकि डिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर कंटूर पे इट विल बी ए कांस्टेंट, सेम डिफ्लेक्शन है ना, समझ रहे हैं ना? एंड वी हैव डेल जेड अपॉन डेल एस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी हैव डेल जेड अपॉन डेल एस इज इक्वल टू 0. सेम स्लोप ना, so it is the corresponding equation, the last formula, the corresponding equation of the stress function phi, the corresponding equation for the stress function phi, we are comparing that with the previous one, del phi upon del s is equal to, you can write del phi upon del y, सॉरी इधर आवाज आ रहा है भाई? Yes, sir. डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एस इज इक्वल टू टाउ एक्स जेड डी वाई अपॉन डी एस माइनस टाउ वाई जेड dx upon ds is equal to 0. This finishes your membrane analogy. I have shown you in the paper, there is a, I think, note. जूम करेंगे, लिख लिया उधर का? जूम करना थोड़ा सा भाई. क्वेश्चन नंबर 5 का ए अभी रीड करेंगे. राठौड़, What do you understand by membrane analogy? How is it useful in torsional analysis? yes. So you can write today's note. So this is the question, half question. Like this, there is some note also. Here question number 6. You read. What do you understand by membrane analogy? How it is useful in torsional analysis? No, it is the, and the second is also, I think, the twisted bar. They are the yes, sir. They are the Explain. expression for shear stress, angle of twist and twisting moments in case of thin rectangular sections.
So I am going to tell you one numerical which usually asked in the 3-dimensional, 2-dimensional problem, 3-dimension 219. सर इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि कैंटिलीवर बीइंग सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड तो वो मैंने कराया है आपको, तो मिला नहीं नोट्स में, मैंने देखा कल। तो आपने अटेंड किया कि नहीं वो क्या पता। देखो मैं बताता हूँ किसने किया था वो अटेंड। ये उसमें था सॉल्यूशन बाय पॉलिनोमियल। अब इसको जूम वापस, अच्छा फिर से करवा देते हैं, चलो। पॉलिनोमियल्स मैंने किए हैं सर दोनों, हाँ सेकंड डिग्री ट्राई किए। अच्छा यस सर। ये देखिए, नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज इफ यू हैव टाइम विल रिपीट दिस। थोड़ा कम कीजिए, पूरा पेज दिखने दीजिए इसका। Are you able to take the screenshot? Yes sir. What is the heading? Cantilever loaded at Bending of a cantilever bending of cantilever. हाँ, at the point P। हो गया, इसका ले लिया। Yes sir. नेक्स्ट पेज बताता हूँ, रुको। ये पढ़ाया है मैंने। पर्सनली यू कैन कम इफ यू वांट टू। Yes sir, ये मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन तो ये देखिए सेकंड पेज, टेक द, Yes sir. ले लिया। Yes sir. सो इट इज, दिस इज फाइनल। द फाइनली भी नहीं, एक और पेज है मेरे ख्याल से, 2 पेज और है भाई लंबा है वो। हो गया। सर इसमें एक्चुअली वो क्लियरली दिख रहा है, कुणाल क्लास में आया सर, वो फोटो ले लेगा, उसके कर देगा मुझे। अच्छा ठीक है, कुणाल ले लेगा, है ना। फिर भी समझ में आना चाहिए आपको, मेरे ख्याल से लंबा है और हमने कुछ बचा था थोड़ा बहुत। आप बोलेंगे तो उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, या तो जैसे मैं ट्राई करूंगा सर नोट्स से। हाँ ट्राई करना, अदरवाइज वी विल रिपीट इन द नेक्स्ट क्लास। So I am talking about the one numerical, it usually comes in the asked in the exam. Yes. I will write bold. So two, three numerical I already explained you in the last classes. Okay. Rathod and anybody, you, if you miss the class somebody, then you contact your colleagues about the, because we cannot repeat the things again and again. Sigma x is equal to 80 x cube plus y. Sigma y is equal to 100 x cube plus 10. Sigma z is equal to 10 9y square plus 10z cube. Tau xy is equal to 100
1 plus y square tau yz is equal to 0, tau zx is equal to x, z cube plus 100 xy. Find the expression for body forces. Find the expression for the body forces at 1, 1, 1. Body forces. Can anybody tell me the equation 123? ये 1, 1, 1 है क्या? Sir, 123 equation are equilibrium in 3D. But what is that equation? Equation, sir, del y x sigma x plus del y tau xy plus del z tau xz plus x in x direction. Okay. So, equation 123 is del sigma x by, you tell, del x, Del x plus del y del y, tau xy tau xy. plus del xz upon del z plus x plus capital X is equal to 0 in x direction. Similarly for the other, you can rotate the, you can rotate the thing. Yes. Yes, sir. By rotation, are you able to write, na? Yes, sir. Just rotate. For x you put y, for x y, y z, x के लिए y, z के लिए x, like this, x के लिए y, you will get the 3 equations, and there are 3 body forces x, y, z. So they ask about the body forces. So can you solve this by this hint? By this hint, how can you solve? You tell me the procedure. So first सर sigma x sigma y sigma z इसमें सर वैल्यू रखेंगे 1 1 1 x y z. तो ये लास्ट वाली इक्वेशन में सर क्या लिखा है? y इक्वल टू लास्ट वाली कौन सी इक्वेशन है? ये वाली 0 है. हाँ सर. उसी को तो रोटेट किया है मैंने, बोला ना देयर आर 3 इक्वेशन. 123 देयर आर 3 इक्वेशन फॉर द 3 del z plus tau upon del x, tau zx, tau del of tau z y upon del y plus z is equal to 0. So you have to find the x, y, z. So how you will find? You give me the x just now. Find the x. From equation 1, 1, 2, 3. Suppose these are 3 equation 1, 2, 3. You find x. Give me the value of x. It is very simple. Today is the date 13. Panchala, Bijit Dubey is there. Durgesh, Hemant, Kunal Sharma is there. Sir x minus 243. Minus
हाँ 243. थोड़ा गड़बड़ हुआ है शायद, कहीं साइन में कुछ हुआ है या मैंने लिखने में कुछ गलत किया है क्या। इट इज़ -443 आ रहा है मुझे। क्यों आ रहा है माइनस? बाकी लोगों को बताओ। पहले तो पहली टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म? हो सकता है 243 भी हो। सर मुझे एक बार क्रॉस चेक करना। अभी कौन है? प्रदीप राठौड़ है इधर ना, प्रदीप राठौड़। एक दो तीन लिखे मैंने, अभी 4 लोग हैं ना। अभिजीत, अभिजीत तो हो गया। सर -443 एक्स। हाँ यस सर। सही है क्या? 443 यस ओके। सर। What about other? Kunal? You do it? And the Vivek? And Abhijit? किसने किया अभी? राठौड़ ने? आंसर किसने बताया? हाँ यस सर। Vivek Pathak is there. You first you find out del sigma x by del x. Differentiate sigma x with respect to x. क्या मिलेगा आपको? Yes, Rathod, you tell for the others. We'll solve it here. So first we want to find this del sigma x upon del x from here. So differentiate this with respect to x. What you will get? Now other, not Rathod. Yes, 3 into 3x square. So 80 is there into 3x square plus, yes, 240x square, and this is 0. So you will get the 240. You can write here. Now similarly del by del y of tau x, tau xy. Del y 200y. 200y, because 2y into 100 to 200. बाकी सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. 240 x square 200 y. The next del tau x z. हाँ, upon del z with respect to x. So 3z square into x. xz square. Finish. Yes. Now you put 111 value of it is given in the question itself. For the value of x y z is 111. We can vary it 211 0 2 1 anything we can put the value. So 1 if you will put it is 240. 240 plus 200 plus here 3xz square means 3. So 440 and 3 443, but if you bring it another side 443. Now you give me the value of y and z just now. So y 0 आ गया. Okay, very good. कैसे आ गया 0 कुणाल? आ गया z
minus 231 Z. Z किधर गया मेरा? नहीं, Z में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा, मेरा कुछ अलग आ रहा है। 501 आ रहा है। It is 501 minus. Yes, sir, 501 minus. So there are three types of numerical. You remind the numerical which I have already. zoom करेंगे थोड़ा. Yes. Question number 1. Can you do that? We already did in the last class. Yes, sir. Principal stresses. कैसे किया था बताएंगे बाकी लोगों को? इक्वेशन नंबर कुछ है? यस सर, इक्वेशन इसमें सर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा क्यूब माइनस I1 सिग्मा स्क्वायर प्लस I2 सिग्मा प्लस I3 और इसको मैट्रिक्स को कंपेयर किया था पहले अपन ने किसी से. मैट्रिक्स कैसे? मैट्रिक्स में सर डायगोनल में सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z है. और सर टाउ xy टाउ xz वो कंपेयर करेंगे सर, तो वहाँ से सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z 0 हुआ. बाकी शेयर स्ट्रेस Q1. So this was अपन ने जो किया है. अरे ये उल्टा जा रहा है ना सब. Everybody is able to see the compare them this 1 1 1 this matrix we can compare with the sigma x. Find the principal stresses. Question number 1. Now question number 2. Rathod, you read the question 2. Yes, sir. Derive the differential equation of the equilibrium in 3D in Cartesian system of coordinates. Yes, sir. हाँ ये तो हो गया. Now numerical. We are talking about the numerical. तो second question. The state of stress at a point is given as all in megapascal. ये सर आपने करवाया क्लास में. ये ना करवाया ना. This is the equation 124. With the help of 124 we can do this. Equation 124. The bottom one. 124. अरे यार सब. This is 124. X is equal to sigma xl sigma y tau m lm n है ना. और so just L and M की वैल्यू दी है. You can find out the value of N. We know the equation L square plus M square plus N square is equal to 1. So with that help we can find the N and just put in the equation 124. So you will get the these forces है ना. So this is one numerical. Second numerical. The third one is the third is here. Today we did it today in the today's lecture. The last one.
प्योर बेंडिंग ऑफ कर्व अपन ने किया ही है, दिस प्योर बेंडिंग ऑफ ए कर्व बार। इक्वेशन कंपेटिबिलिटी किया है, मैंने बोला ना पेपर अपने को एक बार करना है, पर आप लोग आएंगे तब होंगे वो। एक ये रह गया मेरे ख्याल से, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। यू रिमाइंड मी अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 3, 2 and 3 दिखा 3। Yes, sir. So that we'll do in the next class. So I think the next class will be my last class. Okay. If anybody have the difficulty, you give me a ring and you can take the appointment in my cabin. You can come. Anybody, everybody is welcome. If you have any difficulty, you come to my cabin. I will give you the things, because many of were absent and many were not attend sincerely. You are attending now from the last 4 classes. You are sincere and you are able to understood the things. But in the previous classes, in the starting, nobody was serious. Everybody was afraid of the subject. This is also remains pure bending of a prismatic bar. So we will study that in the next class. Pure bending, you write down and you remind me about the pure bending of a prismatic bar. That we will do in the next class. So, are you interested in doing this numerical today only, this one, or no, in the next class? Which numerical? This, the remaining one, this one, zoom करिए थोड़ा सा, the top one, the top one. ये तो कर लोगे शायद, ये तो आ गया है ना, इक्विलिब्रियम वाला 1 1 1 वैल्यू रखना है, यू विल गेट द मैट्रिक्स। Yes, sir. ये नहीं है, एक और था अभी, this was the second, this is the second one. And the condition of equilibrium, ये भी सेम है मेरे ख्याल से ना। ये सर एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था। हाँ, ये भी वही है, ओनली जस्ट यू पुट द वैल्यू 1 1, यू विल गेट द मैट्रिक्स। जैसा वो था ना अभी, कौन सा ये वाला था ना, ये 1 1 इट इज गिवन, और इसमें इक्वेशन दिया उन्होंने। इन दिस क्वेश्चन दे गिव द इक्वेशन, सो यू पुट द वैल्यू ऑफ एंड आस्क टू पुट 1 1, सो यू विल गेट द मैट्रिक्स। ओके, समझ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, थर्ड में 1 1 1, तो इफ यू विल पुट द वैल्यू 1 1 1 इन दिस, यू विल गेट द सिग्मा xx, टाउ xy, टाउ xz, you compare that and you will reach to the this question number 1. So you can do the same. सेंट वेनेंट प्रिंसिपल नोट आता ही आता है, बाउंड्री कंडीशन पे आता है, बाउंड्री कंडीशन। ये नोट्स नीचे, ये किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लीजिए केबिन में आके, है ना, ये मैंने करा दिया है। पढ़ रहे हो राठौड़? Yes, sir. बाउंड्री कंडीशन थर्ड नंबर में क्या लिखा है कहाँ पे? सर? सी ऑप्शन। सी एन एफ, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो? सर 8 वाले का सी वाला जो पार्ट है, राइट शॉर्ट नोट
हाँ, टॉर्शनल एनालिसिस ऑफ रोड सेक्शन। तो हमने जो पढ़ा है उसी में से पूछेंगे। टॉर्शनल एनालिसिस अपन ने शाफ्ट का पढ़ा है ना, सो विल आस्क दैट ओनली। पर ये बाकी कर लेना, बाउंड्री कंडीशन और वो सेंट वेनेंट और ये जनरल में आते हैं। प्योर बेंडिंग ऑफ प्रिज्मेटिक बार अपने को शायद नेक्स्ट क्लास में करना है ना। क्या लिखवाया मैंने अभी? Pure bending ये एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक होमोजेनिटी ये सब आना चाहिए आपको डेफिनेशन थ्योरेटिकल में लास्ट। So let me finish this class. मेरी एक इच्छा थी कि सब लोग एक बार ऑफलाइन आते। I want everybody offline once, at least once, while doing the solving the papers. So it is better for you. It is helpful to clear the exam if you will come offline. You try, हाँ? फोटो खींचना है? खींच लो। Yes, close. लो, आ जाओ, हो गया बंद। फोटो से समझ में आना चाहिए, पर ठीक है, लेट अस यहाँ से